एबे देखिदेबे आसीबा तो ऑडियो बेले बेले टिके प्रॉब्लम हे जाइथिबो एबे ऑडियो ठीक ठाक आसुथिबो डिवाइस करा दिसला ये डिटेक्ट करि नथिबो ओके तो ये हमें जदी देखिया जिबा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज राइट आंसर काई ना कि आपण बोलसे मने रखंतु व्हिच हैज बीन कंसीडर्ड एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जोठी कि बेसिकली से मेंशन करूची ये हमरा दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रीएम्बल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने देखो प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 रु 35 भितरे पार्ट 3 रे आसुची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स ये आपण जानि रखंतु एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये पार्ट 4 रे आसुची 36 रु 51 भितरे जहां सब हमरा रहउची यस सेगुडा होची डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ state policy they act as instrument of instruction next देखिए what is the legal nature of the preamble of the constitution legal nature it is enforceable it is not enforceable it may be enforced in special circumstances yeah none of the above equal directive principle of state policy directive principle of state policy principle of state policy टिके बोधे एपट सेपट हे जाइतला जोथि पय कि स्टार्टिंग रो किछि हे गला एबे ठीक ठाक थिबो issues गुडा ही अछि ठीक अछि which of the following is the legal nature of the preamble of the constitution legal nature हम जदि देखिया preamble लो तो ये आपण माने भलो से जानि रखुन it is not enforceable आको enforce करी होबनी काहे ना preamble is the constitution एथिरे हमें कहि परिबा not enforceable by courts and preamble is the opening statement okay जदि देखिया starting the aims of an objective of the constitution the preamble of Indian constitution was inspired by the preamble of the constitution देखंतु हमर जो मूल तत्व हमें धरि थाउ preamble of the constitution ये हमें कहि परिबा कोठु आड हिची बहुत ही बढ़िया USA is right answer. The preamble of Indian Constitution was inspired by the preamble of the Constitution of USA. USA, okay, France. आमर preamble आमर जो रही ची ये USA रु inspired ही ची. Okay, USA रु आमे कोई बार impeachment of the president, function of the president, removal of Supreme Court and High Court, fundamental right, judicial review, independence of judiciary. ए गुडी का आमे कोई बार USA रु आसी ची. Which of the following statement is statement about the preamble is not correct preamble related एठी आपण देखि रखंदो statement देछि and या भीतर कोइ परिया को statement wrong अछि in accordance with preamble of our Indian constitution सबले मने रखंदो जेतेबेले आपण माने ए जिंस गुडा देखुसनी भलो से असेस करिया दरकार first one is काहेकि ना the preamble the Indian constitution is based on the objective resolution drafted by B.R. Ambedkar First of all, the objective resolution को B.R. Ambedkar draft करनथिले सेकंड रे जहा सुजी आसु ये हमें कोइ परिया फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को B.R. Ambedkar कदाबी हमें कोइ परिया नि पास करनथिले आउ बाकी जोडा रहउची से हमें कोइ परिबा यस डिफरेंस हे जाउची which one of the following is not a part of preamble of the Indian constitution ये भीतर जदी देखिबा को गोटा का हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न जदी देखिए preamble अनुसार न सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सेक्युलरिज्म या फेडरलिज्म देखंतु हमर भारतर संविधान विषय एंड इठी हमें कहि परिबा preamble आसु मूल तत्व रे आपण कदाबी फेडरलिज्म पाइबेनी फेडरलिज्म इज नॉट ए पार्ट ऑफ preamble of Indian constitution a preamble is basically introductory statement of the in a document and the ideals of the preamble were laid down the objective resolution by Pandit Jawaharlal Nehru
The word socialist is added by preamble on 42nd amendment 1976, and a secular was added in preamble by 42nd constitutional amendment act 1976. Which of the following word inserted on the in the preamble by the constitution in 42nd amendment act 1976? 1976 ମସିହାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହା ଭିତରୁ କୋଉ ୱାର୍ଡ କୁ ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମର ଆଡ୍ କରା ଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ମିନି କନଷ୍ଟିट्ୟୁସନ କହୁଛେ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ डायरेक्ट क्वेश्चन आपन पचारछि तो एथिरे हमें कहि परिया सोशलिस्ट बहुत ही बढ़िया द preamble of the Indian constitution based on objective resolution drafted by and moved by Pandit Jawaharlal Nehru and opted by the constituent assembly. It has been amended by the 42nd constitutional amendment act 1976. The amendment added three new words: socialist, secular and integrity. Okay. Which part of the Indian constitution is called heart and soul of the constitution according to Dr. B.R. Ambedkar? B.R. Ambedkar को अनुसार यदि देखिबा heart and soul of the Indian constitution या मध्यरु आमे काहाकु कहिताउ right to constitutional remedies, fundamental, preamble या fundamental duties सबले मने रखंदु article 32 that is आमे कहि परिबा yes of the Indian constitution chetak welcome gives the idea that individual to move to the Supreme Court in seek of justice and the protector and yes guarantor of fundamental rights was also known as right to constitutional remedies. Article 32 of the Indian Constitution have described as the heart and soul of Indian Constitution by Dr. B.R. Ambedkar. Okay, how many types of justice, liberty, equality and fraternity that order has been mentioned in the preamble of the Constitution of India? Question आपण माने बहुत ही भलो से जानि रखंतु how many types of justice, liberty, equality and fraternity? क्वेश्चन जानी नथिबे जदि जानी रखंतु 3 5 2 1 it is necessary to maintain order in society that promise through various provision of fundamental rights and directive principle of state policy provided by the Constitution of India. It comprises three elements which are social, economic and political. Okay. ये जाउची हमें कहि परिया 3 5 2 1 तीन प्रकार जस्टिस लिबर्टी 5 इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी ए गुडी होचे हमें कहि परिया दीज आर द मेंटेन ऑर्डर सोशल जस्टिस फास्ट हमें जदी देखिबा देखि रखंदो हमर फास्ट जस्टिस आसीबो ओके देन हमें कहि परिया सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस तो जस्टिस रे हमर तीन प्रकार सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी हमें जदी देखिया इक्वालिटी लिबर्टी एंड फर्टिनिटी एगुडा हमें जदी देखिया के वर्ड ऑफ प्रॉब्लम सब एगुडा छाडी रखंदो. The term justice in the preamble of Indian Constitution does not embrace which of the following forms? एटी हमें जदी देखिबा justice हमें जदी देखिया social, legal, political और economic. Constitution अनुसार कहा ऊपर justice हमें कोई पर दिया जाए नहीं social, legal, political या economical. क्वेश्चन को भलो से असेस करंतु. The term justice in preamble of Indian Constitution does not embrace legal काहेकि the justice of the preamble three distinct form गोटे होची सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस तीन प्रकार सोशल आसी थाए इकोनॉमिकल आसी थाए एंड पॉलिटिकल आसी थाए लीगल न थाए. द प्रिएम्बल वाज अमेंडेड इन 42nd amendment act. Three new words socialist, secular and integrity were added on 26th November 1949 and the constitution was adopted. Preamble borrowed its ideals of liberty, equality and fraternity from French constitution. The objective resolution was moved on 13th December 1946 by P. Jawaharlal Nehru. Constituent Assembly टिके ध्यान देबे एगुडिका नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 ने अडॉप्ट करथिला. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 रे. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन जनवरी 24th 1950. The idea of the preamble of Indian Constitution is borrowed from Constitution of which of the following countries? Preamble in Indian Constitution is borrowed from Constitution of which of the following countries? आको आपण जदि ध्यान देबा जिवे Preamble of Indian Constitution जोठी मेंशन करिछि yes USA. ओके नेक्स्ट वन देखिबा एगुडा छोट छोट जिंस बड भलो से आनी रखंतु. को देशरु कोन आसी देखंतु एगुडा आपण देखि परिबे हमर ऑस्ट्रेलिया रु कनकरेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया रु फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑस्ट्रेलिया रु जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कनाडा रो हमें जे देखिया फेडरेशन विथ स्ट्रांग स्टेट, वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर ऑफ सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, देन एडवाइजरी जुडिसेक्शन. आयरलैंड रो डीपीएसपी, आयरलैंड रो हमें जे देखिया जिबा द यस नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा
and method of election of president. जापान नु आमे जदी देखिबा प्रोसीजर एस्टैब्लिश लॉ या आमे कोइ पारे जोथरे सुप्रीम कोर्ट आपनकर रन होची. देन आमे कोइ पारे रूसिया रु फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. एंड यूके रु आमे जदी देखिया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, legislative procedure, single citizenship, cabinet system, and आमे जदी देखिया preparatory rights and parliamentary privilege, bicameralism. Okay. Fundamental right आसुची, independent judiciary, judicial review, impeachment of the president, removal of supreme court judges, post of the vice president. Germany ru suspension of fundamental rights during emergency. South Africa ru procedure of amendment constitution, election of member of Rajya Sabha. Republic, ideal of liberty, equality and fraternity. एवढा टिके ध्यान देले आराम से आपण माने आंसर करि परिबे. नेक्स्ट वन, which among the following is not revealed by the preamble of Indian constitution. तो हमर जदी देखिबा ये संविधान अनुसार देखिबा तो एथिरे आपनकर कोन आसुची, date of adoption of the constitution, nature of Indian state, date of enforcement of the constitution, source of authority of the constitution. जेतबेला हमें देखिया को जाइता है which among the following is not revealed by preamble of the Indian constitution. preamble of Indian constitution कथा जदी देखिबा सबले ध्यान देबा दरकार एंड जानिया दरकार जेतबेला आपन देइथा है date of enforcement of the constitution. The preamble reveal four yes हमें जदी देखिए ingredients of or components, source and authority of the constitution, nature of Indian state, objectives of the constitution, date of adoption of the constitution. देखि रखंतु date of enforcement of the constitution एठी आसने देखंतु source of the constitution हमें जानिले the preamble state that constitution derived authority from people of India. And nature of Indian state, it declare India to be sovereign, socialist, secular, democratic and republic polity. Objective of the constitution, it specifies justice, liberty, equality, fraternity and as the object. Date of adoption of the constitution, it stipulates November 26, 1949 as the date. Date of enforcement of the constitution, 26 January 1950, does not part from the Indian constitution. Next bujiba, which of the following objective is not embodied in the preamble of the constitution. देखो preamble liberty of thought, economic liberty, liberty of expression या liberty of belief, not embodied in preamble of the constitution of India. सबले जानि रखंतु ए जिंस गुडा डायरेक्ट आपन जेतले पचारि थाए तो इकोनॉमिक लिबर्टी, इकोनॉमिक निहाते आबरे आपन जानि रखंतु बेसिकली हमें देयर वाज नो इकोनॉमिक लिबर्टी embodied embodied in preamble. The preamble declare India was sovereign, socialist, secular and democratic republic. The objectives stated by preamble there are yes, secure justice, liberty, equality of all citizens, to promote fraternity, to maintain unity and yes, integrity of the nation. Study रखंतु which of the following is eta preamble already discussion कराला. When was the preamble of the constitution last amended? आमे कोइ परिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमर जदी देखिया preamble को लास्ट टाइम पई केबे अमेंडेड करा जायतिला. इंपोर्टेंट जिंस गुडा सबले भलो से बुझि रखिया दरकार. 2013, 1976, 1982 या 1991. When was the preamble of the Indian constitution last amended? Last amended कथा जदी देखिबा that is in 1976. The preamble of Indian constitution last amended in 1976. It was amended by 42nd Amendment Act in 1976. 42nd Amendment Act was passed during the time of Indira Gandhi government. By the 42nd Amendment Act, three new words, socialist, secular and integrity were represented. And 42nd Amendment को mini constitution भाबरे भी कहा जाता है. Only one C करा जायछि आउ तापरठु आउ आकु हमें कहि परिबा कि नै yes repeat करा जानी माने amend करा जानी. As per the constitution, India known as इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन आधार रे आमे कोन भाबरे जानछु, भारत, हिंदुस्तान, साउथ एशिया या आर्यवर्त. बोलो से मने रखंतु डायरेक्ट क्वेश्चन. भारत, भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट. इट्स sovereign, socialist, secular, democratic republic with parliamentary system of government. Okay. Objective resolution, who introduced objective resolution in the constituent assembly? Constituent assembly रे जदी देखिबा objective resolution को फास्ट आमे जदी देखिबा कि इंट्रोड्यूस करथिले. सबले बुझिया चेष्टा करंतु एंड जानिया चेष्टा करंतु ये होसने हमर जवाहरलाल नेहरू. यस आमे कहबे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
yes आमे कहि परिबा को जवाहरलाल नेहरू ही अडॉप्ट करथिले बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ताकू ही इंट्रोड्यूस करथिले जेएल नेहरू को द्वारा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपन को पचारि थाय बेले बेले ओके तो आज रो सेक्शन ने एतिगे थिला एंड समस्त धन्यवाद कि आज रो सेक्शन ने जॉइन हेले डेली आपन पई क्लासेस प्रोवाइड कर दिया जिवो जतबेले भी जोठी डाउट होची जॉइन हेबे एंड हमरो ऑन एकेडमी रे डेली 7:30 रे 8 रे 7:30 देन आमे 9 रे एवं आपण माने 10 ରୁ 11 क्लासेस पाई परिबे तेन करी ट्राई करंतु जॉइन होवा पई एंड निजर प्रिपरेशन को गोटे नेक्स्ट लेवल को नवा पई धन्यवाद जय हिंद।